Hi and welcome to my channel. Hope you all are doing absolutely fine. आज मैं ड्रेसअप हुई हूँ in this lovely black sari because it is Sankranti. So first of all, happy Makar Sankranti to all of you. Especially Maharashtra में we wear black on Sankranti. Otherwise, black is not considered very auspicious for religious events. But yes, Sankranti एक ऐसा festival है जब we don't leave the chance of wearing black. So I'm wearing this beautiful black sari, which has a pallu like this. It has a nice golden border to it, which I have teamed up with a black net blouse, which gives it a very classy look. With that, I've worn simple jewelry, a simple bangle with gold tops, a simple choker, and with a pretty little bindi. This is the makeup which I've done, and I'll be showing you this makeup. So ये makeup look जो है, it is a very simple makeup look. जैसे you can do it at home, especially जैसे हमारे घर पे छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं या वी हैव टू अटेंड स्मॉल फंक्शंस. सो फॉर दैट दिस इज अ मेकअप विच यू कैन डू बाय योरसेल्फ. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड आई विल शो यू स्टेप बाय स्टेप हाउ आई हैव अचीव्ड दिस लुक. तो यहाँ पे मैंने मेरा फेस अच्छे से वॉश कर लिया है और अच्छे से मॉइस्चराइज करके लिया है. इसके बाद आई एम यूजिंग अ प्राइमर. अब प्राइमर ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे चीक्स पे स्पेशली आई हैव सम पोर्स ओपन ऑन माय चीक्स एंड ऑन माय नोज़ एरिया. सो टू मिनिमाइज द पोर्स वी शुड यूज़ अ प्राइमर. So I'm using a primer only on my cheeks and on my nose area because ठंडी का season है and I don't want my skin to become dry. Usually मेरी primer से skin dry हो जाती है. Then after that, it's very important that you also moisturize your lips. तो एक lip balm लेके आप अपनी lips को अच्छे से moisturize कर लीजिए. Now I'm using a concealer. तो कंसीलर का जो शेड होता है इट शुड बी वन टोन और स्लाइटली डार्कर देन योर स्किन टोन. तो जहाँ पे भी आपको डार्क सर्कल्स है स्पेशली अंडर आई एरिया में, वहाँ पे आई एम अप्लाइंग द सनस्क्रीन द कंसीलर. एंड ऑल्सो आई एम अप्लाइंग वेर एवर आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ पिगमेंटेशन. सो यहाँ पे पहले मैं अंडर आइज में लगाऊंगी. इधर आई हैव अ ब्रेकआउट, तो आई एम जस्ट अप्लाइंग कंसीलर ओवर हियर. एंड लिप्स के साइड में हल्का सा पिगमेंटेशन होता है. सो आपके फेस पे अगर एक्ने के मार्क्स है या कोई पिगमेंटेशन स्पॉट्स है तो वहाँ पे आप कंसीलर लगा सकते हैं. नाउ विद अ डैम्प स्पॉन्ज या अ ब्यूटी ब्लेंडर आई एम ब्लेंडिंग दिस कंसीलर इनटू माय स्किन. और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं डैब डैब कर रही हूँ, ना कि आई एम ड्रैगिंग द ब्यूटी ब्लेंडर. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट द कंसीलर इज प्रेस्ड इनटू योर स्किन टू गेट अ स्मूथ एंड फ्लॉलेस इफेक्ट. एंड थोड़ा सा जो स्पॉन्ज में लगा होता है उसी कंसीलर से आई डैब्ड माई आईलिड्स सो दैट वहाँ पे भी थोड़ा सा बेस मिल जाए. एंड जो थोड़ा बहुत लग जाता है कंसीलर ऑन द स्पॉन्ज, विद दैट आई एम अप्लाइंग इट ऑल ओवर माई फेस. सो आई एम नॉट यूजिंग अ लॉट ऑफ कंसीलर बिकॉज आई एम डूइंग अ वेरी सिंपल मेकअप ओवर हियर. नाउ आई हैव टेकन अ फाउंडेशन. सो जैसे कि ठंड का मौसम है, सो आई एम यूजिंग अ फाउंडेशन विच इज़ इल्यूमिनेटिंग एंड विच हैज़ अ लिटिल बिट ऑफ ग्लो. सो आई एम यूजिंग हियर LA Pro का फाउंडेशन एंड it's beautiful because it blends into the skin beautifully and it gives you a dewy finish. So I will link all the products in description box. Do check them out. So यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा स्पॉट्स ऐसे पूरे फेस पे मैं लगा लूँगी फाउंडेशन को. I don't like to overdo the makeup, otherwise it looks very cakey and it looks very unnatural. And especially I'm not doing a heavy makeup, I'm doing a small party function makeup which we need to do for small functions. So यहाँ पे मैंने सब जगह पे फाउंडेशन लगा लिया है and with a damp beauty blender I'm again dabbing it. So you can see I'm not rubbing it onto my skin, I'm just dabbing it and pressing it into my skin. Also जो थोड़ा बहुत फाउंडेशन लगा होता है on the beauty blender, I'm just taking it on my ears also because ears should not look separate या different from your face, they should look a part of your face. So यहाँ पे पूरे face पे मैंने लगा लिया है फाउंडेशन
एंड थोड़ा बहुत बचता है फाउंडेशन ऑन द ब्यूटी ब्लेंडर, आई अप्लाई इट ऑन माई अपर लिप्स. सो अपर लिप्स पे आई डोंट अप्लाई अ लॉट ऑफ फाउंडेशन बिकॉज वहाँ पे स्वेटिंग होती है एंड इट लुक्स लिटिल बैड व्हेन द फाउंडेशन smudges. And also do not forget to apply foundation on your neck area, otherwise it looks very bad if you apply foundation on your face and not your neck. It looks different. और अभी मैंने लिया है एक लूज़ पाउडर. दिस इज़ माई फेवरेट वन, फिटमी का, Maybelline Fit Me का. And it is very important to set your foundation. I used to do this mistake back in my days when I used to just apply foundation and उसके ऊपर मैं कोई setting powder नहीं apply करती थी, but that is really a bad idea. You need to set your foundation very well. And ये वाली loose powder जो है, it is very light, you know, it won't feel as if you've applied anything, but हल्का सा it will give you a mattifying effect, but later on again the foundation will turn on dewy. Now I'm using this eyeshadow palette from Nykaa. इसके शेड्स बहुत ही प्यारे हैं, एज इन थोड़े से कोरल सॉर्ट ऑफ एंड ब्राउनिश एंड ऑरेंजिश अर्दी शेड्स है. सो आई एम वेयरिंग अ ब्लैक साड़ी, सो आई एम यूजिंग अ ब्राउन शेड. तो यहाँ पे मैंने एक हल्का सा लाइट शेड लिया है ब्राउन का, एंड विद द ब्रश विच इज़ अवेलेबल इन दैट आई शेडो पैलेट, उसी से आई एम गोइंग टू अप्लाई. Now you have to apply first the foundation into the crease of your eye. So if you open the eye a little bit, find the depth of your eye and वहाँ से start applying the eyeshadow. And you can see the movement of my hand is that of a viper. So ये viper movement से आपको पूरे eyelid पे from the crease you have to blend the eyeshadow very properly. So you can see I'm blending it well and I'm taking good time to blend it. उसके बाद मैंने एक हल्का सा डार्कर शेड लिया है दैन द प्रीवियस शेड, जस्ट टू गिव अ लिटिल बिट डेप्थ टू माई आईज. सो बेसिकली मिड पोर्शन में और कॉर्नर्स में ही सिर्फ ये मैं अप्लाई करूँगी एंड आई विल ब्लेंड इट प्रॉपरली. सो यू कैन सी इट गिव्स अ नाइस डेप्थ एंड अ नाइस शेडिंग टू योर आईज. So I'm here doing very simple eye makeup, nothing fancy, but I think it's looking good. And then with the sponge what you can do is you can define the eyeshadow very well, because you know it should be like a wing to your eyes. So this is a very nice trick I feel. And अभी मैं हल्का सा shimmery I'm going to make my eyes because my sari has a golden border. सो शिमर जो है ये गोल्डन शिमर है जो मैं सिर्फ बीच में आई एम अप्लाइंग. आई एम नॉट अप्लाइंग टू द एंटायर आईलिड, आई एम जस्ट अप्लाइंग राइट अबव माई आई बॉल विच इज़ इन द मिडल. नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ विच इज़ आईब्राउज. डू नॉट मिस दिस स्टेप, यू नो. Eyebrows give a very nice definition to your face. So first I combed my eyebrows with the spoolie which you get with the eyebrow pencil, and now with the eyebrow pencil I am giving a good shape and making the eyebrows looking bushy. So yes, I'm using a brown shade of eyebrow pencil. Don't use a black shade, it gives a very unnatural look to your eyebrows. I'm doing the next eyebrow and you can see immediately the difference, you know. My eyebrows, like especially the right one, was a little thoda sa shape acha nahi tha, so I just gave a good shape to it and again comb the eyebrow hair properly to give it a good shape. Now I am using this kajal pencil. I'm going to give a little bit smudgy effect to my kajal, and here I'm not going to apply any eyeliner because I don't want it to be too loud. So I'm going to make my kajal a little bit loud. So apply like a good thick line of kajal on your eyes, and my eyes water a lot so I have to wait for them to get a little dry. And with the smudger which is there in this in this kajal pencil on the other side, I'm just smudging the kajal to give it a nice smudged gold look. And I love this look, especially it looks very nice on Indian dresses, especially on sari. So you can see थिक लाइन या थिक काजल ऐसा अपीयरेंस आता है. एंड ऑन द अदर आई ऑल्सो आई हैव अप्लाइड इन द सेम फैशन. सो आई एम नॉट गोइंग टू अप्लाई एनी आई लाइनर एज आई सेड टू कीप इट अ लिटिल सिंपल एंड नॉट, you know, I don't want it to look too loud. Now I'm taking a mascara and I'm applying a coat to my upper lashes. So यहाँ पे दोनों साइड में I have applied
a coat of mascara, and the trick is that let it dry a little bit and apply another coat. So this makes the eyelashes more curled, I feel. So yeah, you can try this and you can see a little bit more difference. And also I'm applying a little bit to my lower lashes, a little bit, not much, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि वो नीचे चीक्स पे या अंडर आई पे लग जाता है. सो आई जस्ट applied carefully. Now I'm using this contour by Sugar, and this is a very beautiful contour, especially if you are a beginner. So basically it's a bronzer and it's beautiful. It does the work of contouring. So you can see where I'm applying this bronzer. I'm applying it exactly on the line which is under the apple of my cheeks. सो हमारी जैसे लिप के कॉर्नर्स है, वो जो लाइन ऊपर जाती है, वहीं पे यू हैव टू अप्लाई. सो यू कैन सी, आई विल शो यू ऑन द अदर चीक. यहाँ पे exactly here you can just make a pout and apply it on that line which is starting just under your cheekbones, because it's very important that you apply it at the right place. And you can see immediately that my face has got a good shadowing effect, and it's looking a bit chiseled. Now I'm going to do the same on my nose. I feel I don't need to do it on my nose. I never do it, but just to show you all, I'm doing it on my nose, so you can give a good shape to your nose if you want to. Now on the jawline, just a little bit under your jawline, you have to apply this bronzer again, to kind of give a good definition to your jawline. Now I'm using blusher which is very light. Actually, it is not much pigmented, but I like it, especially for simple makeup looks. So I'm going to apply it on my cheekbones. Just smile a little bit and apply it on the cheekbones which are raised. So I'm applying a little bit more quantity because it's very light, and I also apply a little bit of it on my nose and on my ears. Now I'm taking a highlighter. So yes, highlighter is not something which is what I apply every time, but I just thought that I'll use it now. So it's a nice goldenish highlighter, and one trick is that take highlighter on the side of your brush, so that makes the application very easy. And if you might have seen, I have not used a separate brush for the highlighter or for bronzing or for blusher. I have used the same brush which I'm using for every application. So you can also do that. It's not required unless until you're doing a professional makeup to take so many brushes. So I've applied the highlighter on my cheekbones, a little bit on the upper side of cheekbones. I'm taking a little bit highlighter on my fingertip and applying above my eyelid, on the bone of my eyelid, and then also to the corners of my eyes, inside corners of my eyes. Now I've taken a lip liner and I'll be applying that lip liner. I'll be lining my lips. So basically ये step बहुत important है, especially अगर आपको एक अच्छा definition चाहिए आपके lips को. So take a lip liner which is close to the shade of your lipstick and apply it nicely. तो उससे पहले, if you would have noticed, I just rubbed the lip balm, because I don't want the lipstick to last for lesser time. क्योंकि अगर lip balm होगा lips पे, so the lipstick will not last for a long time. So just rub the lip balm and then apply. Now the lipstick also which I'm using, it is a matte lipstick, but a little moisture it has into it, and I'm not applying it directly on my lips because I don't want the lipstick to be too dark. So I'm applying it with my fingers, and I love doing this because usually, if not required, you can apply the lipstick with your fingers so that it doesn't become too dark. So I like doing this. And yes, I'm almost done now. You can see that the highlighter is looking so amazing. It's shining so nicely, and I think the eyeshadow is looking perfect. It's not looking too loud, and you can see the finish of my face, the definition on my face. It's looking good.
So yes, I'm wearing a black sari, so I think you can choose makeup shades, especially for eyeshadow and lipstick, which go with your outfit. And if you are making your eyes too loud, then keep your lipstick simple. I'm applying a nice bindi, and here I am ready for the sari look.